Hello friends, in this lecture we are going to talk about derivation of energy density of Planck body radiation using Planck's assumption. That's why it is called as a Planck derivation of energy density of black body radiation. So we will start this one. As you know, you are going to be with me, means with Dr. Amol for next 10 to 15 minutes, and we will discuss the assumption and derivation of Planck radiation law. So first of all, let's see who is Max Planck. Max Planck is the scientist who introduced the concept of quantum mechanics. So in next lecture, in next lecture, or in couple of units or next year, you will see the actual quantum mechanics. But the concept of quantum mechanics means there is a life beyond classical physics was first that idea given or generated or hypothesized by Max Planck. And after that, for that one he won the Nobel Prize in 1981. So but using that concept means using the concept of Planck, he's generally say that when you heat up the material, in that figure you can see the all different colors. So according to classical theory, it really doesn't matter how does you hit the material. It should be the energy of the material should be keep increasing. The classical mechanics never ever talk about the color change or energy change indirectly by heating the any particular material. So Planck was the first person who generated that idea. In black body also we observe the same thing. We when we heat up the black body, when we absorb the black body, we see that the spectral distribution, there is some energy is supposed to be the keep on going, but you know that there is a the variation of energy density is all over from the lambda is equal to 0 to lambda is equal to infinity. There is a value of lambda max, means energy keep on going, and it doesn't just keep increasing. After reaching to certain maximum value started falling down. So for that clearly our classical mechanics is failed to explain. So we started thinking about differently. So whatever derivation he derived, that exactly matches with the observed experimental results. That's why this theory becomes suddenly famous, and we will see how the equation is derived, and then you can clearly understood the equation consists of exponential terms, and there is a maxima and minima you can define very well. So for this one, he just the basic assumption of for the Planck theory of black body radiation. He assumed that the cavity of radiation came from the atomic oscillation in the cavity of wall. So means whole black body will act like a simple harmonic oscillator and energy distributed equally spaced. We will see that one. And the vibration, excuse me, the vibrations or the cavity of radiation is in empty wall, correct? So he assumed the cavity radiation came from the atomic oscillations in the cavity of wall, means the whatever changes, actually it is not like the the something inside it. It is like the wall of the black body, when it started hitting the atomic transition or atomic jumping, there is a funny thing going between the atoms of the wall, and that responsible for the whole kind of energy radiation. So he proposed two assumptions. First assumption, he considered that the energy of an oscillator is in discrete form, means you can have one energy, two energy, three energy, but you cannot have rational form 1.5 energy, 1.3 energy, 1.75 energy. So according to the Planck, the all energies of the oscillator is in discrete form, and the energy of that discrete form is defined as En is equal to NHF. En is equal to NHF, where N is positive integer number, we called it as a quantum number here. H is the Planck constant, F is the frequency of oscillation. Here we reshuffled. F is the frequency of oscillation and H is the Planck constant. So this energy is quantized. Means as I said, you can have one energy, second energy, third energy, but you cannot have 1.5, 1.2,
25 like that energy. And the number, each discrete energy value corresponds to the different quantum state. Means when you are like this equation n is equal to 0, you are ground state. That's why you are, the number of quantum number is 0. When you are n is equal to 1, energy E1 is equal to hf. This is first energy state, and your quantum number is 1. So we can say that different energy state represent the different quantum number. Alright, so each constant state is represented by the quantum number. That is first assumption. In first assumption, you can see he defined the energy of oscillator, that is E is equal to NHF, and he say that each quantum state or each energy state is represented by quantum number, that is 0, 1, 2, 3 and so on. In second oscillation, he constrained the electron to jump particular energy state. So according to him, when when the atom or oscillator, or when there is an actual transition happening between two energy level, the oscillator emits or absorbs certain amount of energy, and that amount of energy is fixed, and that is E is equal to HF. It is very obvious, because in starting he said that the oscillator is like a harmonic oscillator. Harmonic oscillator की खास बात क्या होती है कि all energy levels are equally spaced. तो ऑफ कोर्स अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, HF. अगर वो जब ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, HF. So he say that whenever there is a emission or absorption of energy, there is a transition takes place from one quantum state to the other. Then the entire energy difference between initial and final transition is emitted or absorbed as a single quantum radiation. And again it is, of course, because you restrict the transition only in subsequent energy levels. Means the atom can jump from first energy state to the second, or second to the third, or third to the fourth, but it cannot jump from first to the third और फर्स्ट टू दी फोर्थ. तो ऑब्वियसली जब भी वो कॉन्सिक्वेंट इसमें जाएगा, एक से दूसरी जगह पे जाएगा, तो कितनी एनर्जी करने वाला है, HF. और HF इज नथिंग बट सिंगल क्वांटम रेडिएशन. इसका क्या है, एक ही इसके पास रेडिएशन है, दैट इज नथिंग बट HF इज नथिंग बट सिंगल क्वांटम रेडिएशन. सो उसको अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द एंटायर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन द ट्रांजिशन इज emitted or absorbed as a single quantum in a quantum of radiation. The oscillator emits or absorbs energy only when it changes the quantum state. So of course when it jump from first energy state to second energy state, इसका quantum number क्या हो जाएगा, changes from first to second. That's why his quantum states also changing from first to second. जब ये वापिस अपनी जगह पे आएगा second to first, of course his number is again changing from second to first. It is very obvious that when oscillator emits or absorbs energy only when it changes quantum state. This is other way to say that. जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ऑब्वियसली बिकॉज एक क्वांटम स्टेट से सेकंड में जा रहा तो क्या हो रहा है, वो एक्साइट हो रहा, तो ही विल अब्सॉर्ब एनर्जी. जब वो दूसरे एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, रिलीज करेगा. तो whenever there is a change in quantum state, we can say that the oscillator emits or absorbs energy. Alright, so these are two basic assumption of quantum Planck's constant theory of radiation. So first इसमें क्या बोला था कि energy are quantized and it is like HF. Second इसमें क्या था कि जब भी ये excitation या emission होगा, it always emits single quantum radiation, that is nothing but HF. तो उसको डेरिवेशन करने के लिए अपने पास सबसे पहले एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर वी डिफाइंड, E इज इक्वल टू HF. कंसिडर दैट वी हैव लाइक n नंबर ऑफ प्लैंक रेजोनेटर देयर, ऑसिलेटर्स देयर. तो अगर अपने को एवरेज एनर्जी निकालना है तो एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर कितना हो जाएगा, E बार इज इक्वल टू E बाय n. करेक्ट. सो कंसिडर करो कि n नंबर ऑफ रेजोनेटर है जो आपके पहले कितने थे, ग्राउंड लेवल में n इज इक्वल टू 0 पे थे. जैसे वो फर्स्ट इस पे जाएंगे तो उसके कितना हो जाएगा, ये देखो उसमें क्या, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपको प्रोबेबिलिटी टर्म ऐड हो गई n0 इंटू ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाय kt. अगर आपके सेकंड एनर्जी लेवल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n0 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 एप्सिलॉन बाय kt.
अगर ऐसे अपन nth लेवल पे जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ रेजोनेटर रहेंगे n लेवल पे? n0 इजिकल टू ई टू द पावर माइनस n एप्सिलॉन बाय kt। तो n0 ओरिजिनली है, सब जन अपने ग्राउंड स्टेट पे पढ़े हैं। फर्स्ट स्टेट में कितने रहेंगे वो कौन डिफाइन करेगा? some probability term with the original number of resonator, that's why n0 e to the power minus epsilon by kt। second energy state पे कितने वाले रहने वाले? n0 e to the power minus 2 epsilon by kt। वैसे अगर हम जनरलाइज करते हैं तो nth लेवल के लिए क्या रहेंगे? n0 is equal to e to the power minus n epsilon by kt। बराबर है। तो फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन लेट अस एज्यूम दैट एप्सिलॉन बाय kt सभी जगह पे रिपीट हो रहा, अपन उसको x से डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या हो जाएगा? सबका एडिशन। सो n इज इक्वल टू कितने? जितने जीरो लेवल पे, जितने फर्स्ट लेवल पे, जितने सेकंड लेवल पे, सो और जब टू nth लेवल। सो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर वी हैव n0 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n0 प्लस n0 टू द पावर x प्लस n0 टू द पावर माइनस 2x डैश 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 n0 e to the power minus nx, where x is equal to epsilon by kt। अगर इस फॉर्मूले को अपन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से लिखते तो दैट होल बिग इक्वेशन रिड्यूसेस टू n is equal to n0 by 1 minus e to the power x। This whole equation is reduces to n is equal to n0 divided by 1 minus e to the power x। ये आपकी प्रोग्रेशन सीरीज का सॉल्यूशन है, वी कैन फाइंड इट आउट इन मैथमेटिक्स। ऑलराइट, so after that we have this equation, let's label it as a 1। then total number of energy कितना हो जाएगा? अपने पास टोटल एनर्जी कितनी है? अपन क्या कर सकते हैं? एनर्जी की टर्म से मल्टीप्लाई करो जो क्वांटम स्टेट है आपकी टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल। जीरो इसमें कितना है आपका क्वांटम स्टेट है? जीरो। जीरो इंटू n0। फर्स्ट में जब जाएगा तब उसके पास एनर्जी कितनी रहेंगी? E इज इक्वल टू hf। तो आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएंगी फर्स्ट स्टेट के लिए? n0 e टू द पावर माइनस x। सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? ट्वाइस hf मीन्स 2 इज एप्सिलॉन। उसके लिए क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी कितने रेजोनेंट, दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 एप्सिलॉन n0 टू द पावर माइनस nx। तो वैसे अगर आप जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? n एप्सिलॉन n0 टू द पावर माइनस nx। दिस इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। अगेन अगर आप चाहो तो एक वाली टर्म का आंसर है तो पहली टर्म चली जाएंगी, इट इज जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। सभी जगह पे देखो E0 n0 कॉमन है, सो वी कैन टेक दैट कॉमन आउट। वी कैन ऑल्सो कॉमन e टू द पावर माइनस x। अगर मैं यहां से करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहां से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 चला जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 बचेगा। यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 चला जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x चला जाएगा। वैसे इन जनरल क्या बोल सकते हैं? n माइनस 1 x। तो दिस इज अपन इसमें कुछ नहीं, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। फर्स्ट वी टेक आउट एप्सिलॉन n नॉट कॉमन, देन वी अगेन टेक आउट e टू द पावर माइनस a common। all right, now what we did, we multiplied on this side with e to the power minus x। आप चाहो तो दोनों साइड में भी करके कर सकते हो। so after that what you get if you subtract equation 3 minus 2, so you get e is equal to 1 minus e to the power minus x is equal to epsilon n0 to the power minus x, और ये वाली टर्म 1 plus e to the power minus x plus e to the power minus 2x plus e to the power minus 3x and so on। अगेन अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, व्हाट विल गेट फाइनल। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जैसे के वैसे रहेगा, यहाँ पे वैसे फिर से सीरीज प्रोग्रेशन लगा सकते हो आप। एप्सिलॉन n0 e टू द पावर माइनस x का, इसका क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। सो योर इक्वेशन रिड्यूसेस टू e 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू एप्सिलॉन n0 e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। ऑलराइट, तो उसके बाद आपका इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा? अगर इसको आप इधर लेके आए तो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन n0 e टू द पावर माइनस x 1 माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो अगर उसका करना है तो एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर क्या हो जाएगा? E बाय n। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यू मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय n। अगर अपन ने इन दोनों को एक दूसरे जगह पे लिया तो व्हाट वी गेट? n0 बाय n इज इक्वल टू क्या बचा आपका? ये वाली बची हुई टर्म एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस x 1 माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। अपने को इक्वेशन 1 याद करो, अपने पास क्या था? n इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। उसके ऊपर से अपन क्या निकाल सकते हैं? n0 बाय n कर सकते हैं। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, व्हाट वी लेफ्ट विद 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। तो वो अगर अपन इसमें वापिस रखते हैं तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन? e बार एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e बाय n। ए वाला टर्म, ए वाला देखो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x एप्सिलॉन e टू द पावर माइनस x 1 माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, एक कट जाएगा।
तो आपको बचा क्या, ई बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, करेक्ट। उसके बाद अगेन जब आप अगर इससे डिवाइड करते हो तो ये वाला नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टर्म में आ जाएगी, तो बचा क्या आपका ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, इसके नीचे जाएगा और इसके नीचे जाएगा, एक इसमें कट जाएगा, इसमें वो नीचे वाला ऊपर आने के बाद आपको क्या मिलता है, ई टू द पावर एक्स। सो ई बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स माइनस 1। सो अगेन दैट्स व्हाई वी सेड डिवाइडेड बाय numerator and denominator by e to the power minus x. So now we will put epsilon is equal to hf and x is equal to hf by kt. So what you left with, average energy E bar is equal to hf divided by e to the power hf by kt minus 1, correct. So अगर अपन frequency range में निकालते हैं from f to f plus df, so the number of oscillator is given as nf is equal to 8 pi f square divided by c cube into df. So उसकी वजह से क्या हो जाएगा, so product energy density is nothing but your total energy per unit volume in the frequency range of f and df, that is nothing but product of average energy into nf. So we can write it down, ef df is nothing but nf e bar, correct, and that is equal to 8 pi f square by c cube df hf e to the power x minus 1. तो उसको रीअरेंज करने का आपको क्या मिल रहा है, एफ डी एफ इज इक्वल टू 8 पाई एच एफ क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब 1 बाय ई टू द पावर एच एफ बाय के टी माइनस 1. दिस इज नथिंग बट योर प्लैंक रेडिएशन लॉ. This is nothing but your Planck radiation law. Again, we know that we can derive the similar equation in form of wavelength. Means instead of going with frequency, we can say that we can estimate in form of in between wavelength range. So again, we know that frequency is equal to velocity divided by wavelength. So उसके ऊपर से अपन df निकाल सकते हैं c by lambda square into d lambda. तो उसके ऊपर से अपना एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, e lambda d lambda is equal to 8 pi sc divided by lambda to the power 5 1 by e to the power sc by lambda kt minus 1 d lambda. This is nothing but your Planck radiation law in terms of wavelength. This is nothing but your Planck radiation law in terms of wavelength. So, you know, I hope you understand this one. If you have any problem, you can contact me anytime. So, if you wanna need in more simplified way, don't hesitate to ask me to, you know, record one more time in a simplified version. Which steps I skipped, I can put that one again if someone asks or demand. If you want notes on this one, detailed notes, you can again consult me. So far, thank you very much. Have a nice time.